नाज़रीन, तुर्की के अंदर 7 नवंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत का आगाज़ जो है वो दोबारा किया गया और ये तीसरा राउंड ऑफ टॉक्स था जो कतर और तुर्की ने जॉइंटली जो है होस्ट किया था। और वो मुज़ाकिरात जो हैं वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए हैं। अब तुर्की ने अफ़गान डेलीगेशन को साथ में रखा थोड़े दिनों के लिए और ये कोशिश की कि उनको कन्विंस किया जाए कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ठीक है और किसी न किसी नतीजे पर जो है वो पहुंचा जाए, जिस पे अफ़गान तालिबान को खुसूसी तौर पे कहा गया कि आप दस्तखत करें कि जो मैकेनिज़्म दोनों ने मिल के जो है वो बनाया है। लेकिन वो उसे कासिर नज़र आए, बल्कि हमने देखा कि कल मुत्तकी साहब ने एक स्टेटमेंट जो है वो दी, वीडियो स्टेटमेंट, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए और कुछ ऐसी बातें की जो उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि नामाकूल हैं, लेकिन जब उनकी बात आप सुनते हैं तो वो सारी की सारी बातें खुद नामाकूल जो हैं वो नज़र आती हैं। और ख़ुसूसी तौर पर वो वाली बात जिसमें उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का खुल के जो है वो ज़िक्र किया और कहा कि ये रेफ्यूजीज़ हैं, यानी अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे हैं और वो ये मानने से ही इनकार हैं कि ये एक दहशतगर्द ग्रुप है जो अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए है। बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब के बाद पनाहगज़ीन हैं जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के एरियाज़ में आकर वो रिहाइश पजीर हुए और उसके बाद जो है उनको सिटीज़ में जो है वो सेटल किया गया। इसके बरक्स हमने देखा कि फ़ॉरेन ऑफिस ने, जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस है, उसने एक बहुत डिटेल्ड स्टेटमेंट जो है वो दी है, जिसके अंदर 2-3 बातों का बहुत खुल कर जो है वो एतराफ़ भी किया गया और अपने मौक़िफ़ की निशानदेही भी की गई। और उसके अंदर ये क्लियरली बताया गया कि पाकिस्तान का सिंगल लाइन एजेंडा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और अगर हम सारे सोर्सेज मिलाकर जो इंटरमीडियरीज़ हैं उनसे जो मेरी अपनी पर्सनली बातचीत हुई और सारी चीज़ों का जो है एक मुआसना जो है वो अख़ज़ करें तो उसे बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान ने 2 पेजेस जो है वो प्रेजेंट किए इस फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने नाम, लोकेशंस और एक टाइमलाइन दिया कि आप इन ग्रुप्स, ये लोग हैं, ये इनकी इंटेलिजेंस की जो है वो तफसीलात हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें। और ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी ज़राए नहीं, जो कतर और तुर्की के ऑफिशियल से भी मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अफ़गान डेलीगेशन जो आया हुआ था उन्होंने बहुत सारी बातों पर जो है वो अग्रीमेंट जो है वो दिखाया और ये कोशिश की कि जो जॉइंट मैकेनिज़्म पाकिस्तान ने प्रपोज़ किया था, जिसके अंदर एक हॉटलाइन जो है वो इस्टेब्लिश होगी चमन के ऊपर और तोरखम के ऊपर, जिसको ग्रेजुअली एक्सपैंड करना था। फिर उसके बाद जो है एक इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज़्म के हवाले से जो है वो बात हुई और उसके बाद जो है वो ट्रेड और जो वहाँ पर जो बीमार हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं इलाज के लिए, उनके लिए RFID सिस्टम, यानी एक ऐसा ग्रीन लाइन जो है वो बनाना जिसके लिए उनको जो है कोई पासेस जो है वो इशू किए जाएं और वो ऑलरेडी क्लियर्ड मैकेनिज़्म से बगैर किसी हिंड्रेंस के पाकिस्तान के अंदर जो है वो दाखिल हों। और स्टूडेंट्स और बीमारों के लिए जो है वो इमरजेंसी स्टिकर्स जो है वो लगाना पासपोर्ट के ऊपर, ताकि उनको जो है वो एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर जल्दी में जो है वो फराम किए जा सके जो ज़रूरतमंद अफराद हैं। और सारी बातों पर ऑलमोस्ट जो है वो अग्रीमेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद 24 घंटे बाद जब मुज़ाकिरात की नशिस्त जो है वो दोबारा शुरू हुई, उसके अंदर अफ़गान तालिबान को काबुल के अंदर से एक फ़ोन आया और उस फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ना TTP नाम की कोई तंजीम है और ना हम ये मौक़िफ़ या बात मानने के लिए जो है वो तैयार हैं। जिसके बाद जो है वो मुज़ाकिरात एक डेडलॉक का शिकार तो हुए, लेकिन जो पाकिस्तान का डेलीगेशन था वो 8 नवंबर की शाम को पाकिस्तान के लिए जो है वो वापस रवाना हो गया। अज़रबैजान में जो तुर्क सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और उन्होंने उनको कहा कि हम कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहे, जिसके लिए एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें टर्किश डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर और कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान का दौरा जो है वो जल्द करेंगे, ताकि इस मामले का कोई ना कोई नतीजा जो है वो अख़ज़ किया जा सके और कोई कॉन्क्रीट ग्राउंड्स उसके जो है वो बनाए जा सके। लेकिन इम्पॉर्टेंटली जितने हुकाम से बात की वो कह रहे हैं कि डेडलॉक है
और आप ये कह सकते हैं कि ये बातचीत जो है वो नाकाम हुई है, लेकिन बातचीत ख़त्म जो है वो नहीं हुई। और अगर दोनों तरफ से तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान और जो मीडिएटर्स हैं उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ है कि बातचीत का सिलसिला जो है वो कभी भी ख़त्म होना नहीं चाहिए। लेकिन एक स्टाक रियलिटी जो है वो ज़रूर जो है मौजूद है, जिसमें इस बात की जो है वो यकीन दहानी जो है वो रखनी चाहिए और करनी भी चाहिए कि अटैक्स जो होते हैं वो हमें ख़त्म होते हुए नहीं आ रहे। और हमने देखा कि जो टीटीपी और हाफिज़ गुल बहादुर से मुंसलिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने अलग अलग नामों से जो है वो आए और उन्होंने जो है अटैक्स जो है वो जारी रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वायलेंस जो है वो रुक गया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई लार्ज स्केल अटैक होता है तो फिर सीज़ फायर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक और नेशनल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो है वो बरकरार रखेगा। फ़ॉरेन ऑफिस का एलामिया भी यही कहता है और सिक्योरिटी ऑफिशल्स भी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बंगे दोहल जो है ये बात की हुई है और पाकिस्तान का सिक्योरिटी मैकेनिज़्म ऑलरेडी ये बात जो है वो कर चुका है। अब ये सिचुएशन किस तरफ जो है वो जा रहा है और उसके अंदर जो इंटरनल एक लैंडस्केप हम देख रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस जो है वो क्या आ रही हैं, उन सारी बातों पर आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जनाब वाले रिकार्डो साहब। और वाले से हम पूछेंगे क्योंकि वो इन चीज़ों को आर्काइव भी करते हैं और खुरासान डायरी के साथ मुंसलिक भी हैं, एक ग्लोबल माने हुए रिसर्चर भी हैं, कि वो क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें इस टाइम पर जो उनको ग्रास रूट लेवल पे नज़र आ रही हैं, खुसूसी तौर पर इन ग्रुप्स के अंदर, वो किस शेप के अंदर आगे जो है वो नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया पहले फॉर गिविंग अस द टाइम एंड एक्चुअली कमिंग टू द स्टूडियो टू टॉक टू अस। वाले ये जो सिचुएशन बनते हुए जा रही है ग्राउंड पर, हम देख रहे हैं कि जो ग्रुप्स हैं खुसूसी तौर पर, आप तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको नज़र आता है कि अफ़गान तालिबान जो है वो इन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं? So currently, like after October 27, what we've been witnessing is the presence and the proliferation of different groups which allegedly they have not been linked to the TTP as they claim. However, at the same time, we see that they have been carrying out several attacks from the moment that the TTP stopped claim attacks, and with the TTP also the other faction of the Pakistani Taliban, Hafiz Gul Bahadur. So, and this is something interesting. The timing is a particular of interest because we saw how this group either resurfaced from the past, from 2023 and before, or they have surfaced recently. Just to recall, during the ceasefire between Afghanistan and Pakistan, while the TTP and other factions were still carrying out attacks, one particular group was born and carried out claims. अच्छा, तो वाले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि 2021 के बाद TTP उससे पहले भी थी और पाकिस्तानी तालिबान उससे पहले भी थे, यानी they existed before that also as well. But is this true that after the Taliban took over in Afghanistan, we did see that there was strengthening of the TTP and their attacks succeeded? Definitely. Since 2021, and this is, by the way, this is pretty much observable when you look at the statements of the TTP itself and also of other Pakistani Taliban factions. So after August 2021, we saw how the Pakistani Taliban have been increasing not only the number of attacks across the countries, but also expanding in terms of areas of operations. And also in quality of attacks, meaning large-scale attacks, use of quadcopter drones, and also deploying several suicide attackers. And we also saw like an increase of cooperation between these different militant factions and the creation of alliances, whether they are openly visible, for instance, with the Hafiz Gul Bahadur faction and the Lashkar-e-Islam group and the lesser-known Inqilab Islami Pakistan group, but also less visible alliances between the TTP and the Hafiz Gul Bahadur group, operating on several areas and supporting each other. So, if we look at the statements released recently
by the Ministry of the Foreign Affairs of Afghanistan, there is the truth that, of course, the struggle of the TTP dates back to 2002 and even before we can go back. However, on the other hand, it is true that after August 2021, by the same admission of the militant groups operating across Afghanistan and Pakistan, these groups have been stepping up the number and the quality of attacks. Okay, I have to go. Welcome back, Nazareen. Okay, well, when we look at it after October 7th now, recently, how do we see this landscape? Now, what's the formation? Do we actually see these groups like taking cover and rebranding themselves? Or do we see something else that's emerging? So, one thing is for sure that after specifically October 27, TTP and other Pakistani Taliban factions have been forced to hide the operations, the attacks that they have been carrying out across the country. And this is not something new. We saw this different times before. Every time there is pressure from an external factor in Afghanistan. Exactly. So this is a diplomatic decision, of course, taken in line with what is going on between Afghanistan and Pakistan. And, but at the same time, we saw how multiple new militant factions have been emerging in Pakistan and have been carrying out attacks. As I was saying, some of these are old groups. We already saw them in the past, carrying out some limited number of attacks across the country. And some of them are new, and some of them are completely obscure. And, but while on a surface level, these might seem new groups and completely different from TTP or other militant factions, when you look at the actual operations or attacks on the ground, when you look at their communications and their discussion among themselves and how they claim, the pattern of claim attacks, it's pretty obvious that these are all militant groups that have emerged as a single tashkil or fighting units that have been granting themselves a name, and there is a specific purpose in confusing now the militant scenario in Pakistan. But we've seen them also making political statements now in different parts. What does that aim at? What does it ultimately mean? Because traditionally we've seen most of these jihadist entities, they have been sort of rebranding themselves in ways which are more kinetically oriented. They seems to be more aligned towards or attracted towards making political statements, particularly within the Pakistani jurisdiction. What's the aim behind that? How does it look like? So this is the other half of the strategy of these militant groups and how they have been developing also politically on a number of different levels. So definitely in the last few months we've been witnessing how Pakistani Taliban and other militant organizations across Pakistan have been attempting to capitalize on social political instability within the countries, on specifically social problem issues. So, and the latest evidence for this, it's for instance, the emergence of this particular group, the Tehreek-e-Labbaik Pakistan Force, which several observers initially were tempted to label as the militarization of the TLP. But then we know that the TLP officially rejected these claims. And actually, when you look at it, this is an attempt by the TTP to capitalize on what is going on now with the TLP in order to attract and lure potential disgruntled TLP workers and by joining the TTP platform. So we see that how the militant groups in Pakistan after 2021 have been also trying to politicize their struggle, not only on a religious political level, but also on a purely political and social level, so addressing all the possible grievances towards the state. So now when we've reached this point, in your assessment, do you think that because of the political tensions between both these countries, what's your assessment? Do we see that the graph of these attacks will go down, or we will not see any more large-scale attacks? Or do you think that there will be an oriented strategy which will still carry out attacks but try to shift the blame somewhere else? So definitely
the biggest winner for on the ongoing conflict between Afghanistan and Pakistan are non-state actors, and these can be both those which are linked to the Afghan Taliban historically, like the Pakistani Taliban, but they can also be antagonistic elements against both Pakistan and Afghanistan, such as the Islamic State. So definitely the more the instability between the two countries, the more these militant actors will be able to carry out attacks. And in the possible scenario where this conflict will be protracted also in a more aggressive way between the two, so definitely these groups might provide a platform for carrying out an asymmetric warfare within Pakistan, within the border areas of Pakistan, hence leveraging these militants within Pakistan to achieve some other goals from which are not just localized but also within the global context, and open up a recruitment chapter for themselves as well. नाज़रीन, thank you very much वाला। नाज़रीन, गुफ्तगू जो है वो आपने काड़ो की सुनी। अगर मैं आपको इसको जो है वो समराइज जो है वो कर सकूं तो 3 बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो वाले ने जो है वो बताएं। एक ये बात कहना कि 2021 के बाद जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की एक्टिविटीज़ के अंदर कोई इंक्रीज़ नहीं आया और ये एक पुरानी एंटिटी है, तो ये मुकम्मल तौर पर जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली भी अगर हम देखें तो 2021 के बाद से ही जो है वो TTP जैसी एंटिटी जो है वो पावरफुल बनी है और उसने जो कोहराम मचाया है ट्राइबल एरियाज़ के अंदर खुसूसी तौर पर और बाकी जगहों पर, और कंसिस्टेंटली जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को और आम लोगों को भी जो है वो टारगेट जो है वो किया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो नए ग्रुप्स के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हम देख रहे हैं जो नए ग्रुप्स के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र आती है कि शायद ये कोई नए ग्रुप्स हैं। तो तज्ज़ियेकार ने जो है वो ये बात भी जो है वो की है कि अगर हम इसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो ट्रेस करें तो ये वही पुराने ग्रुप्स हैं, लेकिन चूँकि उनके सोशल और पॉलिटिकल मोटिव्स हैं तो अपने आप को ऐसे रीब्रांड करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं कि गालिबा कि ये कोई नए ग्रुप्स हैं, लेकिन है वही ग्रुप्स या तो हाफिज़ुल बहादुर ग्रुप से मुंसलिक हैं या TTP से मुंसलिक हैं, जो नए ग्रुप्स जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा जो इनके नैरेटिव्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अब कोई जंग के हवाले से नहीं हैं, बल्कि जो लोकल पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पर जो है उसको एक्सप्लॉइट करने की भी जो है वो एक कोशिश जो है वो जारी है। तो एक बहुत क्लियर कट पिक्चर है जिसमें से ये नज़र आता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो एक खलिश पैदा हुई है उसके अंदर जो सर्वाइवेबिलिटी है और जो रिक्रूटमेंट पैटर्न्स है उसे बेसिक फ़ायदा जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ ही अलाइन क्यों ना हो। नाज़रीन, प्रोग्राम के अंदर जो है वो आगे भी इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिएगा बॉर्डर टॉक्स।